Good morning, dear student. Today we discuss about biomechanics and sports. The unit 7 is complete. Now today we will discuss unit 8, biomechanics sports. What is biomechanics? Meaning of biomechanics. Biomechanics is a subdiscipline of physical education. The term biomechanics is a combination of two words, bio and mechanics. Here, bio is a Greek word that refers to life or living, and mechanics refer to the field of physics and the force that act on bodies in motion. The primary purpose of biomechanics is to sorry, evaluate a living organism motion as well as its application of force. The first word is biomechanics is a सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. हम लोग जितने भी गेम एंड स्पोर्ट्स हैं सब में हम लोग बायोमैकेनिक यूज़ करते हैं. बायोमैकेनिक हमारी दो वर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड मैकेनिक्स. दोनों ही ग्रीक वर्ड है. बायो भी ग्रीक वर्ड है और मैकेनिक्स भी ग्रीक वर्ड है. बायो मीन्स लाइफ और लिविंग and mechanics refers to the field of physics, and mechanics means the force that act on bodies in motion. नॉर्मली हम लोग बॉडी के अंदर से जो फोर्स और जो मूवमेंट में जो फोर्स अप्लाई होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें. द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोमैकेनिक्स इज टू इवैल्यूएट ए लाइफ ऑर्गेनिज्म मोशन एज वेल एज इट पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. हम लोग को क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हाथ पैर जैसे कि हम लोग थ्रो करते हैं. थ्रो करने से आउटसोर्स क्या है, आउटसाइड से कुछ हम लोग को फोर्स मिलता है क्या? नहीं मिलता. हम लोग को बॉडी का पावर जो है, अंदर जो बॉडी पावर है उसी को इवैल्यूएशन करके हम लोग बॉल को थ्रो करते हैं. हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, बायोमैकेनिक्स इज ए सब डिसिप्लिन दैट अप्लाई द लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड फिजिक्स ऑफ स्टडी द बॉडी मूवमेंट एंड द कॉजेस ऑफ मूवमेंट्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली. इट कैन ऑल्सो बी said that biomechanics is the study of force and their effect on living systems. According to Butler, the study and analysis of human movement partners in sports is called biomechanics. It can be said that biomechanics is the study of the body as a machine. The study of the body looks at the internal and the external force that act on the body and the movement that this force produces. Next, importance of बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स. क्या क्या इम्पोर्टेंस है हम लोगों को लाइफ में बायोमैकेनिक. बायोमैकेनिक focus on the application of the scientific principle of mechanical physics to understand movements of action of human bodies, and sports implement such as cricket, bat, hockey stick, javelin and etc. बायोमैकेनिक फोकस करता है क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर. नॉर्मली हम लोग को पता है न्यूटन का लॉ है, ऐसे. Then different forces affect human motions and how the movement can be improved are studied in biomechanics. हम लोग ह्यूमन मोशन कैसे डेवलप होगा, मूवमेंट, जैसे कि हम लोग एक बॉल को थ्रो करते हैं. एग्जाम्पल, हम लोग बॉल को थ्रो करते हैं
कैसे थ्रो करने से वो बॉलर एंड तक पहुँचेगा, कितना स्पीड से मारने से जल्दी पहुँचेगा, और कितना रेंज होने से उसके हाथ में पहुँचेगा, ये सब एनालिसिस करना पड़ता है। नेक्स्ट, द नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स provide a better understanding of human body and other internal and external forces that affect human movements, and also the force that act on object in motion. It can improve the technique of sports and games. Next, assist in improving technique. Sorry. The simple method of improving performance in most of the sports is to improve the technique of sports person. It is one of the most motivation factor for for studying biomechanics. Biomechanics can be applied to improve technique in two ways. The first, the teacher of physical education may use their knowledge of mechanics to correct or rectify the error of a sports person in order to improve the proper execution of a skill. फिजिकल एजुकेशन टीचर और कोचेस जो लोग हैं वो लोग बायोमैकेनिक का प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। कैसे? जैसे कि कोई एक जंपर है, वो आया टेकअप जब ले रहा है, मतलब टेकअप जो लाइन है, टेकअप लाइन, हम लोग तो बचपन से तुम लोग लॉन्ग जंप खेले होंगे। लॉन्ग जंप जो लाइन है, लाइन को बिना छुए तुम लोग क्या करते हैं, जंप करते हैं। तो उसी जंप का टेक्निक क्या है? तो टेकअप लाइन से तुम लोग जो जंप करोगे तो 45 डिग्री एंगल में जंप करने से तुम लोग जाकर लैंडिंग पे बहुत डिस्टेंस में जा सकते हो। 90 डिग्री एंगल में तुम लोग जंप करने से क्या होगा, तो वहीं से ऊपर जाओगे और नीचे गिरोगे। और 30 डिग्री में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं जा सकते। जैसे कि तुम लोग ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि कौन सा एंगल जो मोशन होता है, कौन सा एंगल में जंप करने से ज़्यादा डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस जा सकता है। नेक्स्ट, सेकेंड, द स्पोर्ट्स पर्सन में discover new and more effective technique for performing the sports skill. स्पोर्ट्स पर्सन न्यू स्किल डेवलप करेंगे तो जैसे कि बायोमैकेनिक को लेकर न्यू स्पोर्ट्स स्किल डेवलप कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, फ्लक्सबरी फ्लॉप हाई जंप का टेक्निक है, न्यू टेक्निक जो कि डिक्स फ्लक्सबरी इसको डिस्कवर कर रही थी। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प इन इम्प्रूविंग इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट कैसे इम्प्रूवमेंट होती है? स्टडी ऑफ बायोमैकेनिक्स ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इट हेल्प्स in improving design of the equipment used in various sports, shoes and sports clothes, and the equipment used by a sports person may have an effect on the performance either directly or through injury prevention. Biomechanics also help in designing the sports clothes, particularly aerodynamic clothing, and equipment such as in skiing, speed skating, cycling, and swimming. Such improvement in equipments ultimately help in enhancing sports performance. जैसे कि हम लोग देख सकते हो, स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उन लोगों का ड्रेस देखना, जो कि रनिंग इवेंट में उन लोगों का जैसे कि सैंडो है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, और स्पाइक पहनते हैं क्योंकि उनको फ्रिक्शन मिलता है। ठीक है, क्योंकि स्पाइक पहनने से उनको एडवांटेज मिलता है। जैसे कि फुटबॉल में हम लोग स्टॉड यूज़ करते हैं, स्केटिंग में, रोलर स्केटिंग में देखना भी कैसे बैलेंस होगा, उसी हिसाब से भी रोलर स्केटिंग बनाया गया है।
बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, facilities performance in sports. The main goal of biomechanics is the improvement in sports performance. Biomechanics enhance performance by utilizing mechanical principles to improve an individual technique. The equipment she or he used to and to modify the specific training method. Biomechanics is also used to develop such techniques that reduce the chance of injury as well as make sense in the equipment design to reduce injury. In this way, an athlete usually remains uninjured and hence performs better. So, it can be said that biomechanics help in improving sports performance. नॉर्मली हम लोग क्या होता है बायोमैकेनिक में, हम लोग जो भी कपड़ा पहनते हैं या जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता है कि जो हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं कि उसमें क्या होता है हम लोगों का इंजरी कम होता है। नॉर्मली इंजरी होता ही नहीं है, इसलिए उसी हिसाब से बायोमैकेनिक के हिसाब से उसको बनाया गया है। जैसे कि एक एथलीट एक स्पोर्ट्स पर्सन इंजरी कम हो, इंजरी ना हो, इसी वजह से उसको बायोमैकेनिक के हिसाब से बनाया गया है। नेक्स्ट, सपोर्ट इन प्रिवेंटिंग इंजरी. Biomechanics help in preventing injury in various ways. It also helps in the process of rehabilitation of injury. Biomechanics is successful in identifying that force may have caused an injury, how to prevent the injury from occurring or reoccurring, and what exercise may help in the process of rehabilitation of injury. Biomechanics is used to provide the basis for changes in technique, equipment, and training to prevent injury. Next, help in promoting safety. Biomechanics also helps in promoting the safety of sports person. Teacher of physical education impact training to the sports person. They have a responsibility to not only guide them to enhance their performance but do not do so in a safe and effective manner. When a sports person moves his nervous system, instruct his muscles to contract. This contraction causes bone to move around the axis of joint. The teacher of physical education gets such knowledge from biomechanics. Biomechanics help in improving safety of sports person along with the enhancement of their sports performance. Next, works in the improvement of training. Biomechanics has a potential for bringing modification in training which help in improving sports performance. Biomechanics can be applied in various ways. A proper mechanic analysis of the technical deficiency of a sports person can help a physical education teacher in identifying the type of the training the sports person required in improving the sports performance. The sports person may be limited by the strength, endurance, speed, flexibility, and any specific aspect of his technique. Once the teacher learns about the limitation, training can be impaired accordingly. Then facility understanding of human body. Normally, biomechanics helps in understanding the complete human body. The knowledge of biomechanics provides the teacher and learner with a better understanding of human body and various internal and external forces that affect human movements. हम लोग का बॉडी का जो पोस्चर्स है उसको कैसे सही तरह से हम लोग यूटिलाइज करेंगे, मतलब कैसे मूव करेंगे, उसका मूवमेंट होने से कितना फोर्स, इंटरनल फोर्स हम लोगों को मिलेगा, उसके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. Then
the teacher come to know about the various systems such as nervous system, muscular system, skeletal system, and extra etc. Their mutual interaction. This knowledge is done enable the physical education teacher to be better teacher or instructor of many physical activity and skills encompassed within physical education. The last one is assist in improving teaching and learning process. Biomechanics helps in teaching and learning process. In physical education and sports, each and every activity usually involves some type of movements. Biomechanics helps in moving the body with precision or accuracy, which ultimately helps in enhancing the sports performance. It can be allowed that biomechanics helps in improving teaching and learning process. It can be said that biomechanics is significant in improving sport performance, reducing the risk of injury, improving techniques, equipments, design, and promote safety. Thank you, children. Have a nice day. Have any doubt? You can ask me in Google Meet. Thank you.